यहाँ पर अपने साथ अपना सूटकेस भी लेकर आए हैं एंड यू आर टोटली गोइंग टू लव देयर दिस आर्टिफिशियल प्लांट वाला कैटेगरी. इट इज़ लाइक हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग. तो आज है डे 3 हैदराबाद में और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर और दिन का टाइम हमारे पास है और हमारे होटल के जस्ट पास में है IKEA. तो हम जाने वाले हैं IKEA और वहाँ पे क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं वो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ. और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं सोकर उठी हुई हूँ. मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर रेडी होती हूँ. तो अभी हम लोग ऊपर 8th फ्लोर पर और यहाँ पर ही जिम है. तो एक बार मैं आपको यहाँ का जिम दिखाती हूँ. तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर इडली सांभर एंड चटनी. बस इनका ब्रेकफास्ट है. ब्रेड पकौड़ा एंड सेवइयाँ. सो टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस होटल और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और सामान हम लोग नीचे रख देंगे और फिर हम लोग IKEA निकल जाएंगे यहीं से. तो रूम को बाय बाय कह देते हैं. तो हम लोग यहाँ पर अपने साथ अपना सूटकेस भी लेकर आए हैं तो जिससे जो थोड़ा बहुत सामान होगा इसके अंदर ही रख देंगे डायरेक्टली. तो सबसे पहले हमने अपना लगेज अंदर जाते से ही लॉकर में रखा. लॉकर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और लॉकर का जो पासवर्ड है वो आप अपने आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं. So Prasim was actually feeling hungry, so he tried some samosas over here. तो जो समोसे थे they were like air fried और साइज काफ़ी छोटा छोटा था और टेस्ट वाइज they were average. So this was our like first visit to IKEA, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है. बट थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ पर हमें एक पैम्पलेट सॉर्ट ऑफ मिल गया. उसके ऊपर प्रॉपर एक मैप था और सारी इन्फॉर्मेशन थी. सो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट हमें पूरा आइडिया लग चुका था. बट हमारे पास सिर्फ 2.5 आवर्स थे विच इज़ एक्चुअली वेरी लेस. यदि आपको IKEA को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, सारे सेक्शंस को देखना है, तो एंटर करते से ही सबसे पहले ही होम डेकोर कम होम इंटीरियर वाला आप सेक्शन कह सकते हो वो आता है. तो उसमें सारे सेगमेंट्स आपको मिल जाते हैं. बेडरूम, लिविंग रूम, किचन किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है. तो इन लोगों ने इस तरह से सैम्पल यहाँ पर क्रिएट किया है हर चीज़ का. एंड थ्रू दिस यू कैन गेट आइडिया ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स और वॉल पे कैसा पेंट करना है, फर्नीचर का टेक्सचर, एवरीथिंग. तो जो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनका तो प्रोडक्ट कोड आपको नोट करना होता है एंड देन यू कैन पिक दैट अप लेटर ऑन. बट आई डोंट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट. पर यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे प्लांटर्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर ये बल्क में रखे हुए हैं तो आप इनको डायरेक्टली यहीं से पिक कर सकते हो. पर आगे जाके प्लांट्स का प्रॉपर पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है तो आप वहाँ से पिक करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर आपके पास चूज़ करने के लिए काफ़ी सारी वेराइटी होगी.
had initially shortlisted some furniture for our house by going through IKEA website, पर जब उस furniture को हमने खुद यहाँ पर physically देखा, then we changed our mind and then we thought to go with some other piece of furniture. तो furniture के case में यदि हम physically furniture देख कर लेते हैं, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes,
good times, dancing till it feels alright. All night, we're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times, dancing till it feels alright. All night, we're all about the good vibes, all about the good vibes. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have. So in each section there is a huge variety and there is something for everyone, and you're totally going to love this artificial plant wala category. It is like so real that you cannot identify the difference between the real and the artificial one. After this section I didn't vlog anything because I got very tired and I also had to concentrate on buying items because we were running short of time. So guys, IKEA से शॉपिंग करने के बाद हम लोग लंच करने चले गए थे और उसके बाद फिर हम लोग होटल गए. वहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और बस चेंज करने के बाद हम लोग स्टेशन जा रहे हैं. जस्ट 1.5 आवर बचा हुआ है ट्रेन के लिए. 7 o'clock पर है, बट मेनी पीपल आर सेइंग कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है. तो बस हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड और सोच रहे हैं कि फटाफट से बस टाइम पर पहुँच जाएँ कैसे करके. और IKEA का शॉपिंग एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ. तो पहली बार हम लोग गए थे वहाँ पर शॉपिंग करने. जो भी लिस्ट बनाई थी ना हम लोगों ने, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें वहाँ दिख ही नहीं रही थी. और हम लोग पहली बार गए थे तो बहुत टाइम लग रहा था समझने में, तो आधा टाइम उसमें चला गया. और जो बचा हुआ टाइम था तो हम लोगों ने एक ही सेक्शन में हम लोग गए. हमें वहाँ पर जो जो चीज़ें पसंद आई हम लोगों ने वो पिक कर ली, पर जो लिस्ट में था उसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ पिक की, बाकी कुछ भी नहीं लिया. तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेंगे बैंगलोर में. और मैंने क्या क्या परचेज़ किया है वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी. और जो लोग बैंगलोर से हैं ना, आई वांटेड टू टेल देम कि यहाँ पर ना एक डेस्क है. तो यहाँ पर आप लोग परचेज़ करने के बाद वो डेस्क पर जाकर आपको 50 kg तक सामान